A day after the centre launched the Agnipath, a radical recruitment plan for the armed forces, protests have erupted at various parts of the country, especially in Bihar, with youngsters accusing the government of making a fool of them. Protests broke out in Bihar's Muzaffarpur and Buxar on Wednesday. We also have shots now coming in from Jehanabad and Nevada as well as Gaya of protests taking place. Protesters are asking what they will do after 4 years. The new recruitment plan aims to cut down government's massive salary and pension bills and free up funds for arms procurement. The new policy has drawn criticism and questions from several quarters. Critics, in fact, have argued that a 4-year tenure will hit fighting spirit in the ranks and can also make them risk-averse. Now remember, under the scheme, about 45,000 people between the age of 17.5 years and 21 years will be inducted into the service for a 4-year tenure. Now, during this period, they will be paid a monthly salary between 30 to 40,000 rupees plus allowances. They will also be entitled to medical and insurance benefits, we're told. But after 4 years, only 25% of these soldiers will be retained and they will go on to serve for a full 15 years in non-officer ranks. The remaining will exit the services with a package between 11 to 12 lakh rupees, but will not be eligible for pension benefits. आर्मी का जो पिछले साल जो कोविड के पहले जो रैली हुआ था उसका फिजिकल और मेडिकल हो गया था, उसका एग्जाम नहीं लिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया और 2 साल में उसका एज एक्सपायर हो गया। एयरफोर्स का एक एनरोलमेंट लिस्ट आना था जो मेरिट लिस्ट है और एक रिजल्ट आना है, वो भी नहीं आया, कैंसिल कर दिया गया, एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। 21 फिक्स कर दिया पर एज लिमिट और 4 साल का टीओजी कर दिया गया, उसको 15 साल 18 साल जो ऑलरेडी पहले से था एग्जिस्टिंग उसको कर दिया जाए। हम लोग को कैंसिल कर दिया गया, बोला गया वहाँ से। अभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ में, अगेंस्ट में। हम लोग 3 बजे भोर में एरोड्राम दौड़ने जाते हैं और हम लोग को वापस ला, हम लोग को टीओडी हो गया है, वापस लेना चाहिए। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे, 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे। हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं, इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक हैं। We also have a reaction coming in from an official in Jehanabad. Let's listen in. लड़का लोग ट्रैक पर थे, अचानक जो है कोयला 2 नंबर प्लेटफॉर्म कोयला वाला ट्रेन लगा हुआ है, इधर से पत्थर चलने लगा। हम लोग भी उसको खदेड़े हैं और लड़के लोग भाग करके बहुत टेनी बिगा ट्रैक हैं। अभी बहुत सारे लोग चले गए, कुछ लोग लड़के शरण लिए हुए हैं और यहाँ पर लॉज बहुत सारा है स्टेशन के करीब। हम लोग उन सारे लॉज वाले को नोटिस देने वाले हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको जो है। और अभी तो ट्रैक रूट और रोड जो है खाली हो गया है, चालू हो गया है, अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। सर तो क्यों जाम की वजह, सर क्या मांग थी लोग की? सेना के रेगुलर भर्ती के लिए ऐसा उनके बैनर पर देखने को मिला हमको, इसी को लेकर के बच्चे लोग थे, लेकिन शांतिपूर्ण चल रहा था। अचानक जो है इतना पता चलने लगा। कितने देर से जाम की वजह सर? 7 बजे से तो हम यहाँ पर हैं, 7 बजे। फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक खाली हो गया, ट्रैक खाली हो गया। कोई घायल है क्या सर? मेरा एक गार्ड निरंजन को पत्थर लगा है। कई पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। चोट तो आता ही है जब पत्थर चलता है। आपको भी चोट लगी क्या सर? मुझे नहीं लगा है अभी, धन्यवाद। Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has tweeted this morning on the Agnipath scheme. He's actually said, as per the wishes of the respected Prime Minister, Agnipath Yojana will prepare the youth for the service of the nation, giving them the opportunity of a glorious future. He tagged the UP government and he said assures that Agniveers will be given priority in post-service adjustment in the police and allied forces
of the police. My colleague Manish Kumar is tracking the details of the story. We spoke to him a short while ago. I beg your pardon, he actually joins us live on the phone line at the moment. Manish, have the protests intensified since this morning? Yes, of course, it is spreading, and in fact, there are this protest today has started in the new areas like Sahasra. We are seeing the videos from Sahasra. Yesterday, we had the protest visuals coming from Muzaffarpur, Buxar, Arrah. But today it seems that more protesters and this protest has spread to the new areas, and somewhere the authorities are having a tough time convincing these protesters who were preparing for the exams for quite some time. In fact, there was no vacancy for the last 2 years, and somewhere that is also one of the main demands, that those backlogs should be also cleared. But somewhere they were taken aback. They had no expectation that the government will announce such recruitment policy where the recruitment is just going to be for another 4 years, even though the central government ministers as well as officials and the army officers also have tried to clarify about this recruitment policy, but it seems to have very little effect or impact on the morale or on the psyche of the students who are up in arms, who want that the old recruitment system should be restored. Vidya? Well, Manish, thank you so much for joining us.